Hello friends, today we are going to study a beautiful poem by the Dalpat Chauhan entitled The Conversation on a Magshar Night. This poem is taken from Chauhan's collection of poetry entitled Tupachi. First of all, initially we must take some basic information about the poet. Dalpat Chauhan, born in 1940, is a Gujarati Dalit writer and poet. Before starting the poem entitled The Conversation on a Magshar Night, we must know the word Magshar. Magshar is a Gujarati word and the meaning of the word is the second month in a traditional Gujarati calendar. Basically, Magshar is a month in a Gujarati calendar. Now we will move toward the actual poem entitled The Conversation on a Magshar Night. We will try to understand the poem in English as well as we will try to understand the meaning of this poem in Hindi. Actually, this poem depicts the poor condition of the Dalit community in Gujarat and injustice faced by the poet and his beloved. This poem throws light on suffering, poverty, and injustice faced by Dalit community in Gujarat, as well as this is a depiction of a suffering of poet and his beloved's life. Now we will turn toward the poem The Conversation on a Magshar Night. The poet and his beloved having conversation on a Magshar night. Darling, this I remember, the village pond sings slow song. Magshar shivers in your lap with inadequate clothes. प्रिय, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, हमारे गांव का जो तालाब है वो एक गीत गा रहा है और ये मगशार महीना जो है ये ठंड का मौसम का महीना है और तुम्हारे शरीर पर पर्याप्त कपड़े ना होने की वजह से तुम्हें ठंड लग रही है. मैं ये बात जानता हूँ. And I, feeling miserable, whom do I do? और मुझे पता है कि मुझे काफी दुख हो रहा है कि तुम्हारे शरीर पर कम कपड़े हैं और तुम्हें इस सर्दी के मौसम में ठंड लग रही है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. Dear, do you feel cold? Come close. But what shall we cover ourselves with? The sky or the earth? In your body the Magshar freezes. Shivers since long. प्रिय, क्या तुम्हें इस मगशार महीने के सर्दी के मौसम में ठंड लग रही है? मेरे करीब आओ. मगर हम इस सर्दी से बचने के लिए क्या ओढ़ ले? क्या हम इस आकाश को, अंबर को ओढ़ ले या फिर इस धरती को ओढ़ ले जिसे हमारे शरीर की इस सर्दी से रक्षा हो. तुम्हारा शरीर इस मगशार महीने के ठंडी के मौसम में काफी ठंडा हो जाता है और तुम्हें काफी देर से सर्दी लग रही है. In this empty moonlight of Magshar, your teeth plays a drum, and in the mosquito's song, darling, how many eras we have to pass. Darling, we cannot count two things. Firstly, the stars in the sky, and secondly, the insult your and mine. मगशार के इस सर्द भरे चांद की खाली रोशनी में तुम्हारे दांत कपकपाते हैं और यहाँ पर मस्कीटोज गाना गाते हैं. प्रिय, इस तरह से ही हमें कितना समय यहाँ पर व्यतीत करना होगा.
क्या हम उसे गिन सकते हैं? मुझे लगता है हम दो चीज़ों को नहीं गिन सकते। एक तो आकाश में कितने सारे तारे हैं हम उसे नहीं गिन सकते, और दूसरा इस जातिगत भेदभाव की वजह से, इस अनटचेबिलिटी की वजह से, इस दलितपन की वजह से हमें कितना सारा इनजस्टिस, इंसल्ट और जातिगत भेदभाव फेस करना पड़ा। हम इन चीज़ों को कभी भी नहीं गिन सकते। डार्लिंग, हैव यू वॉच्ड योर ब्लूमिंग फेस इन द लेक? I cannot afford to buy you a mirror. In the desire to buy it, how many springs we live with. I can tell if I can count the wrinkles on your face. प्रिय, क्या तुमने अपना खिलता हुआ चेहरा तालाब के पानी में देखा है? ये कैसी बेबसी है कि इस जाति व्यवस्था के कारण, इस ऊंच नीचता के कारण मैं तुम्हारे लिए एक ढंग का आईना भी नहीं खरीद सका। उस आईने को खरीदने के चाह में हमने कितने सारे वसंत बिता दिए, मगर वो आईना हम नहीं खरीद सके। मैं तुम्हें बता सकता हूँ और मैं ये गिन भी सकता हूँ कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर कितने सारे रिंकल्स है। वो आईना खरीदने की चाह में हमने इतने सारे वसंत बिता दिए कि अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स यानी झुर्रियां आ चुकी है, और जो काम आईना नहीं कर सकता वो काम मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर की वो झुर्रियां तुम्हारे लिए गिन सकता हूँ। I scratch the wound scars on your back. This is the only sign of our being companions of this and future lives. You too remember this. Friends, this is a last stanza of this poem, and very important hidden message is here in this stanza. The message has given by the poet, and the message is that in our Indian society there is a caste system, and low caste people always faces discrimination through the hands of high caste people. In Indian society, it is normal to the high caste person to beat a low caste person or insult a low caste person in front of everybody. The poet is saying to her beloved that there is a wound or scars on your back that I can scratch. That wound or scratch might have given by some higher caste person to that lady, because that lady might have tried to break the rules and rigidity of caste system. She might have gone against the caste system. She might have tried to break the rules of caste systems, and therefore she is facing the consequences. She is carrying a wound given by the high caste person on her back, and this is the reality of Indian society and caste system. Even today in the 21st century, we can listen or watch the news or read the news of caste discrimination and atrocities committed against the Dalits in all over the India. फ्रेंड्स, दलपत चौहान जिस दर्द को बयां कर रहे हैं, वो दर्द अक्सर हमें न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई देता है। किसी दलित ने मूछें रख ली तो उसकी हत्या हो जाती है। किसी दलित ने घोड़ी चढ़ ली शादी के लिए तो उसकी हत्या हो जाती है, उसको घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता। कोई दलित अगर मंदिर में जाना चाहता है तो उसको भगाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर आप NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर डेटा देखेंगे तो एट्रोसिटीज़ की ऐसी कई सारी केसेस आपको मिल जाएंगी जिनमें मारपीट करना, हत्या करना, ये सारी चीज़ें दलितों के साथ होती है। और इसी चीज़ को पोएट दलपत चौहान
इस पोएम के जरिए बयां करना चाहते हैं. सो दिस इज द result of Indian caste system. In the last stanza of this poem, poet says to his beloved that the wound and scars and scratches on your back is the only sign of our being in this society and in this world, and you should remember this forever. So friends, आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.